जेंडर डाइवर्सिटी में उच्चतम रिकॉर्ड बना, महिला कर्मचारी की हुई बढ़ोतरी। अवतार ग्रुप 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों ने 2023 में 3,38,000 महिला कर्मचारियों को शामिल किया। मुंबई डाइवर्सिटी, इक्विटी एवं समावेशन DEI समाधानों में भारत की एक प्रमुख कंपनी अवतार ग्रुप ने भारत में महिलाओं के लिए अवतार एंड सेरामाउंट बेस्ट कंपनीज फॉर वीमेन इन इंडिया BCWI इंडेक्स के 8वें संस्करण की घोषणा की। अवतार ने अवतार एंड सेरामाउंट मोस्ट इंक्लूसिव कंपनीज इंडेक्स MICI के 5वें संस्करण की भी घोषणा की, जो देश का एक अग्रणी समावेशन सूचकांक है जो उन कंपनियों को मान्यता देता है जिनके समावेशन में डाइवर्सिटी के समस्त आयाम को शामिल करने का आशय है। BCWI-MICI अध्ययन का 8वां संस्करण फरवरी 2023 में शुरू हुआ और अध्ययन में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों की 354 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 300 से अधिक DEI मैट्रिक्स का मूल्यांकन किया गया था। 2023 का व्यापक BCWI-MICI अध्ययन जेंडर डाइवर्सिटी के अनुसरण में 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डालता है। अध्ययन से पता चला है कि 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों ने 2023 में 3.38 लाख महिला कर्मचारियों और 5.59 लाख पुरुष कर्मचारियों को नियुक्त किया है। Okay, sure. My name is Dr. Soundarya Rajesh and I am the founder and president of Avatar Group, and we are here in Mumbai announcing the Avatar and Seramount 2023 top 10 best companies for women in India and the 100 best companies for women in India. And we have had organizations such as ZS Associates, IBM, Citi and Tech Mahindra being part of the top 10 best companies, and these are organizations that have done tremendously when it comes to creating an enabling environment for women professionals, as a result of which they have garnered this premium position as a top 10 best company for women in India. Some of the policies or enablements that they have created include providing flexible working policies, providing skilling and skill upgradation methods, also looking at ways in which non-conscious bias in the workplace can be defeated, and also having specific hiring policies and programs which ensure that over 3 lakh women have entered into the workplace as the combined number employed just in the year 2022-23 by the 100 best companies for women in India. Should I ask each one of them to speak a little bit about their organizations? Okay. So we have been participating in Avatar and Seramount for the last 5 years. We have been successfully into top 10, and I think as rightly said, this is the validation that whatever the DNI charter we are having and the roadmap we are having, we are on that track. So Thep7 is intentionally diverse and globally inclusive organization, and we focus on women, and being the champion of inclusion, we also focus on people with disabilities, people with different sexual orientation, having people across 100 plus countries. Culture and nationality is also one important inclusion factor for us, and of course the generations. So this entire Avatar model is really helping us to drive the charter throughout and ensuring that we are making a positive difference to people. We value the differences, we respect the differences, and that's where this is helping us. The DNI is helping us not only for the business, but it's the fundamentally right thing to do. That's what we believe. Thank you. मेरा नाम नेहा अरूर है और मैं ZS एसोसिएट के साथ काम करती हूँ। अवतार के साथ हमारा जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी सालों से है और
हमारी कंपनी की 3 वैल्यूज़ हैं, डू द राइट थिंग, ट्रीट पीपल राइट एंड गेट इट राइट। और हम जब इन तीनों वैल्यूज़ को देखते हैं, एक्चुअली ये बहुत फंडामेंटल राइट्स भी हैं। जब हम अवतार के स्टडी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब हम वो पूरा स्टडी देखते हैं, उसके आंसर करते हैं क्वेश्चन, तो हमें बहुत सारे अपनी ही कंपनी के बारे में पता चलता है कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। तो जो अच्छा कर रहे हैं उसको हम सस्टेन करना चाहते हैं कि हम इस पर लूज़ नहीं करें अपना फोकस, उस पर बनाए रखें। बट जहाँ जहाँ हमें लगता है कि गैप्स हैं और हमें लगता है ये इम्पॉर्टेंट है फोकस करना, तो उससे हमें समझ में आता है कि और क्या क्या हो रहा है और हमारे को और क्या करना चाहिए। और जब हम अपने आप को देखते हैं और अपने बाकी और भी कंपनीज को देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि क्या करें और कैसे। सो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हमें आज की स्ट्रैटेजी नहीं, अगले 5 साल तक हम सोच सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी चेंज एक बार में नहीं कर सकते। तो हम हर साल की अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इस साल किस चीज़ पे फोकस करके क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो ऐसे हमें आज के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए भी एक रोड मैप मिलता है, पूरे वो डेटा पॉइंट्स। और ऐसा नहीं है कि ये कोई कहानी है, ये डेटा फैक्ट बेस्ड है, इट्स नॉट एनेक्डोटल कि किसी ने कह दिया तो ये कर दिया। इट इज एब्सोल्युटली जो लोग सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, जो डेटा दिख रहा है। तो इट्स वेरी वेरी हार्डकोर, इट्स वेरी एट द हार्ट ऑफ द कंपनी। सर, आप दोनों से सवाल है। कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और आज यहाँ पर बात हो रही है गवर्नमेंट। आप दोनों बताइए कि किस तरह से ये जो कंपनी अवतार है काम कर रही है, और आपका नजरिया क्या है इस कंपनी के लिए, और ऐश्वर्या मैडम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। He's renamed me. मेरा नाम सौंदर्या है। No problem, no problem. Just to translate for your benefit, he's saying behind every successful man there is a woman. You got it? I got it. Awesome. Would you like to go first, Thiru? Yeah, I think, first, my name is Thirukumaran Nagarajan, and I work for IBM. And we are, first I don't want to say we're a global company. So we have the privilege of learning from the best practices from around the world, from Japan to America to Europe to South Africa. And I think that's the beauty. And we believe it is responsible and in India to take those practices, implement them, and share with everybody else too. So our partnership here with Avatar has been long-standing. We have not only shared some of these best practices, we have learned from the industry in India itself. So it's really important that we believe what works in India is contextual for India, and how can we introduce best practices for employees in our company for India and for the world. So we have exported many of our best practices from India to other companies, other countries where we have IBM operating as well. So we learn from many of these best practice in the industry benchmarks, and as my colleagues here stated, it is continuous improvement. And once we have a principle of what we call be equal. So our aspiration is to be equal, as you say, men and women. Behind successful man, there is also a woman in everything that we actually do. Yeah. So it is very, very important. Fabulous. Thank you. My name is Aditya Mittal. I work for Citi in India, and we've been associated with Avatar for the last 4 years, very actively participating in their surveys. Our belief is that, for India to become a developed country, the first thing that would have to change is women's participation in workforce, which is very low by global standards. So we are trying to do our small bit in enhancing that. Our percentage of women is about twice that of the national average, and we are trying to take it even further, and Avatar is helping us in that cause. So thank you very much. Thank you.